Okay, Assalamu alaikum students. I hope you can hear me loud and clear. We are going to continue with some practice problems of the same topic induction motors. बुध को मैं आपका क्विज लूंगा इंडक्शन मोटर्स का, ठीक है। जो क्विज 2 पिछला आपका मैंने कैंसिल कर दिया था बिकॉज ऑफ एलएमएस इश्यूज, अब वो बुध को होगा और इंशाल्लाह ताला जुमे तक मैं चेक करके उसका रिजल्ट्स भी रिलीज कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो हम जो उस वक्त सवाल कर रहे थे, मैं वही वाला फ्लैश कर दूं। एक हम और थोड़ा सा आगे देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। So this is the problem that we were doing, example number 6.2, और हमने इसमें एफिशिएंसी निकाल लिया था मोटर की, ठीक है। हमने 6.2 किया था which was this problem and I distinctly remember ये हमने पूरा कर लिया था और उसकी एफिशिएंसी 88% आई थी, ठीक है। अब जो हम बेसिकली नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे शॉर्ट प्रॉब्लम, उससे पहले एक मैं आपको और डेरिवेशन दिखा दूं, ठीक है। हमने ये वाली डायग्राम तो देख ली थी, ठीक है। आई होप यू कैन ऑल सी दिस, ठीक है। इसके अंदर हमने देखा था कि पावर फ्लो इंडक्शन मोटर के अंदर कैसा होता है, और ये डायग्राम आप अभी पहली बार देख रहे हैं, लेकिन जब आप एसी मशीन्स पढ़ेंगे और डीसी मशीन्स पढ़ेंगे तो बिल्कुल सिमिलर किस्म की डायग्राम उसमें भी आप देख रहे होंगे। मोटर और जनरेटर के अंदर होता है कि बस डायरेक्शन बदल जाता है, ठीक है। जनरेटर के अंदर डायरेक्शन एरो का राइट टू लेफ्ट जा रहा होगा, इसमें लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक हो गया। इसके अंदर पी एन जो है थ्री फेज की पावर आप लेते हैं विच इज इक्वल टू अंडर रूट वी एल आई एल कॉस थीटा। उसमें से जो लॉसेस होते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल स्टेटर कॉपर लॉस आता है, उसके बाद आता है आपके पास कोर लॉसेस, जो पावर बचती है उसको आप कहते हैं एयर गैप पावर। दिस इज द पावर विच गोज फ्रॉम द स्टेटर एयर गैप इनटू द रोटर। रोटर के अंदर फर्दर आपके पास लॉसेस आते हैं, सबसे पहले रोटर के इलेक्ट्रिकल लॉसेस, उसके बाद जो पावर बचती है वो कन्वर्टेड पावर बचती है। दिस इज एंटायरली द मैकेनिकल पावर। इसमें से सारे इलेक्ट्रिकल लॉसेस आप निकाल चुके हैं, कोर लॉसेस आप निकाल चुके हैं। इस कन्वर्टेड पावर में से आउटपुट मैकेनिकल पावर के अंदर कन्वर्जन होने में फ्रिक्शन और स्ट्रे लॉसेस दो होते हैं, वो और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यू गेट द आउटपुट पावर, ठीक हो गया। और इसी चीजों को निकालने के लिए आप इसकी जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट्रिकल डायग्राम है वो भी हम देख चुके हैं, ठीक है। जो इसकी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट्रिकल डायग्राम है उसमें हमने देखा था कि स्टेटर साइड तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, स्टेटर के इम्पीडेंस और पैरेलल में एक ब्रांच होती है जो कि कोर लॉसेस को रिप्रेजेंट करती होती है विच इज जस्ट लाइक द ट्रांसफार्मर। रोटर को जब हम शिफ्ट करके आते हैं तो रोटर का पैरामीटर आता है JX2, ठीक है। इसको हम सॉरी थोड़ा सा ऊपर अगर जाके देखें ये, ठीक है। तो हमारे पास रोटर का जो पैरामीटर है, जो हम सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड की जाने रिफ्लेक्ट करके लाते हैं, तो उसमें रोटर की इम्पीडेंस JX2 बनती है, जबकि जो रोटर की रेजिस्टेंस है वो डिवाइड बाय एस आती है, ठीक है। ये हमने कन्वर्जन देखा था पिछली क्लास में, या शायद पिछली से पिछली क्लास में, और इसके अंदर हमने डेरिवेशन के अंदर देखा था एक लॉक्ड रोटर कंडीशन। तो हम देखते हैं उस लॉक्ड रोटर कंडीशन में जो भी पैरामीटर्स आ रहे होते हैं वो जेनेरिक सिचुएशन में एस के रिलेशन के थ्रू रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। जो रोटर का इंड्यूस ईएमएफ है होता है वो एस टाइम्स ई आर नॉट होता है, वेयर ई आर नॉट इज द रोटर इंड्यूस वोल्टेज इन द ब्लॉक रोटर कंडीशन। इसी तरह से जो रोटर की इम्पीडेंस है वो आपके पास एस टाइम्स एक्स आर नॉट आ रही होती है, एस टाइम्स, क्योंकि आपको पता है कि रोटर जो भी इंडक्टर होता है उसकी impedance is a function of the frequency, ठीक है। resistance is not a function of the frequency but the impedance is, और frequency जो है वो slip के function से आ रही होती है, because the rotor electrical frequency is s times the stator electrical frequency। ये हमने फिर derivation एक देखी थी, और इस डेरिवेशन में फिर हमने फाइनल जो रोटर की इम्पीडेंस निकाली थी वो इस सर्किट को देखते हुए निकाली थी विच वाज दिस। उसके बाद हमने टॉप बॉटम जब एस से डिवाइड कर दिया था तो फिर रोटर की इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जो है वो कुछ इस तरह से आई थी। तो जो रेजिस्टर है रोटर का इक्विवेलेंट उसको एस से डिवाइड कर देते हैं और इम्पीडेंस जो है वो JX2 रहती है,
ठीक है। स्टेटर कॉपर लॉस अब कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा। फॉर द स्टेटर कॉपर लॉस यू विल हैव टू डू 3 टाइम्स I1 स्क्वायर R1। ठीक है, 3 टाइम्स इसलिए करते हैं कि ये जो सर्किट बनता है ये पर फेज, और आपने पूरी मशीन का निकालना पड़ता है तो 3 फेज निकालना पड़ता है, इसलिए आप इसको 3 से ज़रब दे देंगे। इसी तरह से जब आप कोर लॉसेस निकालेंगे, कोर लॉसेस के लिए भी आपको 3 से ज़रब दे देना पड़ेगा। तो जो 3 टाइम्स कोर लॉस आएगा वो होगा 3E1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय RC। तो ये पूरी मशीन का कोर लॉस बन जाएगा। इसी तरह से जो रोटर कॉपर लॉस है वो बन जाएगा 3 टाइम्स I2 स्क्वायर R2/S। ठीक है, ये पूरी मशीन का रोटर कॉपर लॉस बन जाएगा, यानी कि 3 फेज रोटर कॉपर लॉस, ये बन जाएगा 3 फेज स्टेटर कॉपर लॉस। ठीक है, ये बन जाएगा 3 फेज कोर लॉस। ठीक है, तो पिछली जो एग्जाम्पल थी उसके अंदर तो आपको वो पैरामीटर्स उसने डायरेक्टली दे दिए थे, लेकिन आप इसकी इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम से ये चीजें कैसे निकालेंगे, तो इट इज ओवर हियर। ठीक है, फ्रिक्शन और मैकेनिकल लॉसेस जो है वो कैसे निकालेंगे, उसकी तरकीब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, नाउ प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। यहाँ पे जो एक रेजिस्टर है उसको आपने जो डिनोट किया है विच इज R2/S। so this R2/S is basically, दिस इज नॉट द रोटर कॉपर लॉस। ठीक है, सॉरी, एक सेकेंड, एक सेकेंड को आप होल्ड करिएगा। सॉरी, मेरा छोटा बच्चा आ गया था, उसको मैं छोड़ के आया। अच्छा, अब इसके अंदर बेसिकली अब जो देखने वाली बात है, दिस इज द रेजिस्टर विच इज कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टेटर कॉपर लॉस, और 3 फेज के लिए आप इसको 3 से ज़रब दे देंगे। 3 फेज कोर लॉस के लिए आप इस रेजिस्टर RC से निकालेंगे, और 3 फेज को करने के लिए आप 3 से ज़रब दे देंगे। दिस इज जस्ट लाइक द ट्रांसफार्मर। लेकिन क्या ये वाली चीज रोटर कॉपर लॉस के बराबर है? ठीक है, इसके अंदर रोटर कॉपर लॉस भी शामिल है, इसके अंदर मैकेनिकल लॉसेस भी शामिल है। ठीक है, सो दिस इज नॉट इक्वल टू जस्ट द रोटर कॉपर लॉस। इसके अंदर रोटर के अंदर जो मैकेनिकल लॉसेस हैं वो भी शामिल हैं। और अलग अलग हम कैसे कर सकते हैं इसको, कि ये रोटर कॉपर लॉस और जो उसका इक्विवेलेंट मैकेनिकल लॉसेस हैं उसको अलग करने की जो तरकीब है, यू कम टू दिस डायग्राम विच इज ऑन पेज नंबर, ये वाला, दिस इज द डायग्राम विच इज ऑन पेज नंबर 326। इसके अंदर वो जो रेजिस्टर था जिसकी वैल्यू थी R2/S पिछली डायग्राम में, उसको आपने कैसे तोड़ दिया, आपने कहा R2/S इज सिंपली इक्वल टू R2 प्लस R2/S माइनस R2/S, R2/S, सॉरी, R2 माइनस R2। ठीक है, जो ओरिजिनल रेजिस्टर था R2/S उसको आपने कैसे ब्रेक कर दिया, आपने कहा दैट R2/S इज इक्वल टू R2 प्लस R2/S माइनस R2। ठीक है, तो अब ये वाला जो R2 है ये इधर आ गया, और ये वाला जो R2/S माइनस R2 है ये इधर आ गया। ठीक है, ये जो गैजेट है ये इधर आ गया। ठीक है, इसको देखें आप पढ़ें तो क्या आएगा, R2/S माइनस R2, R2/S माइनस R2। तो इन सब का जो सम है वो पिछले वाले के बराबर ही है, R2/S, लेकिन अब आपने इसको 2 में तोड़ दिया है। तो अब जो रोटर कॉपर लॉस है वो इस रेजिस्टर के थ्रू आएगा विच इज 3I2 स्क्वायर R2। और जो कन्वर्टेड पावर है, कन्वर्टेड पावर वो होती है जो कि मैकेनिकल पावर जारी होती है, जिसमें से फ्रिक्शन लॉसेस और स्ट्रे लॉसेस आप निकाल दें, तो आपके पास आउटपुट पावर रहती है दैट P कन्वर्टेड इज इक्वल टू R2 इंटू 1 माइनस S/S। ठीक है, तो आपके पास अब ये जो इनिशियल रेजिस्टर था R2/S, उसके अंदर रोटर के अंदर जो लॉसेस हैं वो पूरे मैकेनिकल लॉसेस प्लस रोटर कॉपर लॉस शामिल थे। तो उसमें से रोटर कॉपर लॉस को अलग आइसोलेट करने के लिए आपने R2 रेजिस्टर अलग से निकाल लिया, और जो रिमेनिंग पार्ट है दैट कंट्रीब्यूट्स टू द कन्वर्टेड पावर। ठीक है, ये सबको क्लियर है? ठीक है, प्लीज ये सबको क्लियर है, जल्दी बताएं मुझे। ठीक है, जो इसकी इलेक्ट्रिकल डायग्राम हमने बनाई थी उसमें यहाँ पे जो R2/S आ रहा था,
ठीक है, इट अपेयर्ड के वो रोटर इलेक्ट्रिकल लॉस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अंदर रोटर इलेक्ट्रिकल लॉस के अलावा मैकेनिकल कन्वर्टेड पावर भी शामिल होती है। और हम उसको आइसोलेट कैसे करते हैं, जो ओरिजिनल रेजिस्टर R2/S था उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। एक पार्ट है R2 और एक पार्ट है R2/S-R2। तो ये जो R2/S-R2 है, ये कन्वर्टेड पावर को शो कर रहे होते हैं, और खाली जो R2 वाला पार्ट है, दैट शोज द रोटर कॉपर लॉस। ठीक है, इसको भी आप 3 से ज़रब देंगे टू फाइंड फॉर द होल मशीन, क्योंकि अगेन दिस सर्किट इज फॉर द पर फेज इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यासिर एजाज, लेफ्ट साइड रोटर है, राइट साइड स्टेट। यार उल्टा बोल रहे हो यासिर। इट वाज ऑब्वियसली क्लियर कि ये वाली साइड स्टेटर है, ये वाली साइड रोटर है, और रोटर को हम सेकेंडरी साइड से प्राइमरी की जानिब लेके आए थे। ठीक है, स्टेटर साइड को मूव नहीं किया था, रोटर को प्राइमरी से सेकेंडरी की जानिब लेके आए थे। यानी कि रोटर के जो भी पैरामीटर्स थे उसको ए इफेक्टिव स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इधर लाए थे। ठीक है यासिर, इज इट क्लियर नाउ? ठीक है यासिर, अब क्लियर है आपको? ठीक है, नाउ वी लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें ये वाले कंसेप्ट जो है ये आपके पॉलिश हो जाएंगे। तो हम 6.3 अभी करने लगे हैं, और 6.3 के अंदर अब इसने देखें ये जो लॉसेस हैं वो उसने आपको सिर्फ रोटेशनल लॉसेस बताए। बाकी के उसने जो है वो तमाम उसने जो पैरामीटर बताए, दे आर इन दी फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, सो लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम, लेट्स डू इट ऑन द व्हाइट बोर्ड ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो दिस प्रॉब्लम इज एग्जाम्पल नंबर 6.3। ठीक है, लेट्स डू दिस ऑन द व्हाइट बोर्ड। ठीक है, मेक अ नोट ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, इसका जो डेटा है वो हम, ठीक है ना, वी आर ऑन द व्हाइट बोर्ड। और इसमें हमने, हमें जो डेटा उसने दिया, उसने कहा है कि ये एक 460 वोल्ट की मोटर है, 25 HP है, 4 पोल है, वाई कनेक्टेड है, और इसके अंदर जो इम्पीडेंस है वो उसने बताया R1 जो है वो है 0.641 ओम्स, X1 है 1.106 ओम। ठीक है, इसके साथ हमेशा मैं J लगा देता हूँ ताकि प्रॉब्लम नहीं हो कि ये इंडक्टेंस है। R2 है 0.332। ठीक है, JX2 है 0.464 ओम, XM है 26.3 ओम। ठीक है, अब देखें इसके अंदर RC उसने नहीं बताया आपको, तो RC को आप इग्नोर करेंगे, यानी कि इसके अंदर कोर लॉसेस आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि RC जो है वो इसके अंदर मौजूद नहीं। ओके, आई अगेन रिमेम्बर्ड Abdullahi is in the class. Sorry Abdullahi, I'll switch to English. Okay, just remind me whenever you are in the class Abdullahi and I'm using Urdu, so I can switch to English. Okay, so this is the data for the question, and now what we have to find, if we have to find miscellaneous things, we have to find, okay, the rotational losses are 1100 watts. Okay, so the rotation losses are 1100 watts, and they are constant. Core losses lumped with the rotation losses. Okay, so core loss is a function of the rotational losses. So core losses are merged with the rotational losses. That's why he hasn't given us RC. So now we don't need to bother about the core losses. For a rotor slip of 2.2%, so the value of slip is 2.2%. So without the percentage, it is equal to 0.022.
Okay, and at the rated voltage and at the rated frequency, find the motor's speed. Okay, so now this guy is saying what is the speed of the motor? Speed of the motor is equal to 1 minus s times the synchronous speed. And I know the formula for the synchronous speed is, what is the formula for the synchronous speed? Synchronous speed is 120 times stator electrical frequency divided by number of poles. So I know that this machine is 60 hertz. Okay, the frequency is 60 hertz for this machine. I will put 60 hertz in place of the rotor electrical frequency, and number of poles is 4. So what is the synchronous speed? Plug that in here, multiply it by 1 minus 0.022. So what is the answer? Quickly tell me. That will be the motor speed. Quickly, quickly, quickly. What is the motor speed? Quickly tell me. Has anyone found out? Okay, again it's Anam 176.4. 176.4. I think Navira's answer is right. Anam, your answer is a factor short uh, in the book. It's 1760 in the book. Maybe you have made some mistake in multiplication. So the total answer is 1760 RPM. That's a motor speed. That is correct. Okay. So now next thing is it is saying find the stator current. Okay. So that one is easy to find, but we'll have to analyze it using the circuit analysis. Okay. So now what we do is we make the diagram. Okay. So now the guy is saying what is the stator current. What does he mean by the stator current? So you draw this circuit. This is the stator parameters. RC is to be ignored, so we just have JXM. Then we make the rotor parameters. The rotor parameters is JX2. Okay, so this was 0.641. Okay, and this one was 1.106J. Okay, and this one was 26.3J. Okay, and how much we are giving phase voltage, since this is the phase per phase diagram. This 460 volt is the voltage and the machine is connected in Y combination. So the data is always for the line in a three phase machine, so you have to convert it in the phase voltage, and for a Y connection phase voltage is line voltage divided by the under root 3. Okay, and this jx2 value is 0.464j. Okay, and then we know that we have R2 that we use for the rotor copper loss. It is 0.332, and then we have another R2 into 1 minus S over S that we use to find the converted power. Okay, so this is now the per phase equivalent circuit. Stator copper loss will come from here. Rotor copper loss will come from here, and the converted power will come from here. Okay, so we can also substitute this with the numerical value. Put S equals to 0.022 in this formula and R2 equals to 0.332. Then what is this equal to? Quickly tell me. I want to put this as a number because I'm going to be solving it using the circuit analysis technique.
Can you give me the value of this resistance? Multiply R2. R2 is given here 0.332 times 1 minus 0.022 over point this. What is the value? 44.45. Is this the value of this resistor? 44.45. 14.75. Is the value 14.75? Okay. Okay, so have you calculated this properly? 14.75. Okay. Looks okay to me. 14.7. Yeah, now it looks okay. Okay. So now what does this guy say in the part B? We have to find stator current. Stator current is basically I1. We have to find I1, and there is no problem in finding this. What you simply need to do is find the net impedance of the circuit and divide that by 460 over under root 3, so you will get I1. So I1 will be equal to 460 over under root 3, which is the phase. Is everyone clear why we divided by under root 3? Because this circuit is always per phase and the data is always given for the line voltage, and the conversion between line and phase voltage for a Y connected machine is 460 over under root 3. Okay. And what will be the net impedance in the circuit? The net impedance will be this branch is in parallel with this plus in series with this. So how do we calculate the parallel combination? The parallel combination, it is product over sum. So we are going to take the, okay, this 14.75 plus 0.332. How much is this sum? This sum is something like 15 point how much? What is the sum of this and this? Quickly tell me. Has anyone found the sum? 14.75 plus 0.332 is how much? 15.082. Okay. So we can, just to make the things easier for us, 15.32, 15.32 plus 0.464J. This is in parallel with this, so it is equal to product over sum. Okay, so this is the parallel combination net, and then I have this thing is in series 0.641 plus 1.106J. Okay, so if you solve this, you will get the stator current per phase. Quickly tell me the answer. You can change your calculator into the complex mode and then find it for me. Okay, so I use the product over sum rule for the parallel impedance, net parallel impedance, and then this is again in series with this parallel combination. So this will be the net impedance. This will be Z net, and this is the phase voltage. Okay, now quickly give me the answer. So I1 should be equal to how much? And we are taking this one as the reference, so give it an angle of 0. So whenever you are going to be solving this electrical circuit, you will give the reference 0 angle to the phase voltage given to the stator. Has anyone found the answer to this? What will be the current of I1? That is the same as the stator current, because you know that this side is the stator, this side is the rotor. Please quickly give me the answer.
Has anyone found the answer? Has anyone found the answer? Okay, I have answer from Yasir Ijaz. It is 15.49 minus 10.43 J. Yasir, can you give this answer in polar form? So I can check from the book, because in the book the answer is in polar form. Can you please give me the answer in the polar form? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बात कर रहा हूँ। मैं यार क्लास ले रहा हूँ अभी। क्लास चलिए, अल्लाह। Okay, can you give me? Okay, this answer is 100% correct. So Yasir and Asadullah's answer is correct. Have everyone else also done this? So the stator current per phase is 18.8 angle minus 33. Angle is minus 33.6 amperes. So this is the stator current, which is I1. Has everyone also? Navira has also got this same answer. Okay, that's very good. Okay, so this is how you can find I1. And in the next part, they say what is the power factor. Okay, so we had already done part A before. Part C is what is the power factor of this machine. Power factor is how much is the angle between the current and the voltage. So the voltage angle is 0 and the current angle is lagging by minus 33.6. So power factor will be equal to cos 33.6 lagging. So it will be equal to how much? Can anybody calculate what is cos of minus 33.6? So that will be a lagging power factor, because the current is lagging the voltage. Voltage is having an angle 0, but the current is having an angle minus 33. So the current is lagging the voltage. How much is the power factor? So the power factor is 0.83 lagging. That is correct. Okay, so you will say power factor is 0.83 and it will be lagging power factor, not leading power factor. Okay, so is everyone clear up till here? Can we go to part D? Okay, can we go to part D? Okay, so let's rub out some stuff from here. Now we don't need this. Okay, now in the part D, the guy is saying, part number D, he's saying find the converted power and P out. And what is the converted power and what is P out? Okay, so I know that the converted power is in this resistor, and this resistor is the rotor copper loss, and this resistor is the stator copper loss. Okay, so the converted power is in this 14.75 resistance. How can I find the converted power? If I can find this I2. Okay, so I already know I1, and how I can find I2? Some part of I1 goes in the I2. So I2 will be equal to, and then I will use that same I2 to find the converted power. Okay, so how much power fraction of I1? I1 we already know I1 was equal to 18.88 minus 33.
Okay, so I already know I1. And how much of I1 will go in I2? It will be equal to 26.3 J divided by 26.3 J plus 0.464 J plus 0.332 plus 14.75. So this is the fraction of I1 that will go in I2. Quickly tell me the value of I2. Plug in the value of I1 from the first part and give me the answer for I2 quickly. Quickly give me the answer for I2. Has anyone found the answer for I2? Has anyone found the answer for I2? Okay, I2 is 16 minus 4.16 something. Okay, I will go with you. The book is doing this in a different method. So let's say your answer is correct. It is 16.09 minus 4 angle. Okay, so let's accept your answer. So the P converted for this machine. Okay, since now this is a single phase circuit, so you have to find uh, for the whole machine by multiplying by 3. So it will be 3 into 16.09 square into 14.75. So what is the answer? That will be the converted power. Quickly find this answer. What is the answer? Has anyone found the answer? Navira has given me some answer. It is how much? 12 kilowatt? 11 point converted power is equal to 11 point 11.45 kilowatts, something close. Okay, 11.45 kilowatt seems right. So just remember, you always have to multiply by 3 because this circuit is for single phase. Okay, so it is equal to 11.45 kilowatt. Okay, and how we can find the output power? The output power is equal to converted power minus friction losses. And the guy has given us the friction losses. The friction and rotation losses is 1100. So output power will be equal to 11.45 kilowatt minus 1.1 kilowatt. So this will come out to be equal to 10 point, I think 10.35 kilowatt. Okay, so is everyone clear about this partly?
how you can find the converted power and the output power. And this method is different from the book. We have used our own method, and let's see how the book did it. Let's go to the book. The book has used a different approach. So this is the same problem we are doing. And in part number D, for the converted power and the output power, the book used a different approach. They did not find I2 like us. What they did is they used the approach of this stator copper loss. They found the stator copper loss because we already knew I1, and you have to multiply it by 3 for the three-phase machine. So they found the stator copper loss, and then they took the input power. Input power is under root 3 VL times IL times cos theta. We had also found out cos theta, and this IL will be the line current. So you are going to convert your uh, phase current into line current, and in Y connection phase current and line current are same, so it is same. And the line voltage was 460 watts, so your input power was 12.5 kilowatts. So you subtracted the stator copper loss from the input power, and you got the air gap power, and the air gap power was 11.845 kilowatt. And you know that the air gap power and the P converted can also be related by this formula, in which the P converted is also equal to 1 minus S times the air gap power. So they use the same formula and they got the same answer as us. Okay, we can do using this approach also, and we can use by finding I2 and finding the converted power directly from the circuit. Okay, and for the induced torque and output torque, the formula is the same. Both the torque is equal to power over omega. But for finding the induced torque, the formula is air gap power divided by omega synchronous, and for the actual is P out divided by omega m. So the induced torque is the ideal situation. In the ideal situation, you assume that all the air gap power is being supplied in the output power, but that is not so, because after the air gap, uh, there are some losses like rotor copper loss and mechanical losses. So we assume that the ideal power is whatever went to the rotor, which was P air gap divided by omega synchronous. So the induced torque is equal to 62.8 Newton meters, and the actual is what went to the rotor after subtracting the rotor copper loss and after subtracting the friction losses, which was just equal to 10.485 kilowatt divided by the actual motor speed, which was omega m. So the actual load torque was 56.9 and the induced torque was this. So that